Hello everyone, this is our first video on Cognizant game-based aptitude assessment, and I will be covering all types of questions in this series. Okay, and definitely you will perform very good in your Cognizant assessment if you will watch the full series. This is the first video, let's start. Also, if you are preparing for Cognizant, make sure to purchase the Cognizant mock test. The link will be in the description, in which you will be getting one practice sheet for communication assessment. Then there are two mock tests in which aptitude test and gamified assessment is provided as a mock test, and aptitude test and gamified assessment is provided as mock test. So though two mock tests will be there for aptitude, then there is technical assessment. Okay, technical assessment also available. So technical assessment mock tests are also available for your preparation. Then actual previous year question sheets are available with solution. This will be very helpful for you guys. And practice aptitude sets are also available for your practice. This will be a complete preparation for your Cognizant Genc assessment. You can purchase it. The link will be in the description to buy. Let's start with our structure first of all. So there are multiple type of games. Okay, the first game which we will be discussing in this video is deductive logical thinking or Geo Studio challenge. So this is the first type of challenge based game which we will be solving in this video, and I will be solving some difficult questions so you guys can get an idea. In this series, actually, we need to find a missing symbol based on 4 cross 4 or 5 cross 5 grid based on the geometrical Sudoku. So this is the first type of game which Cognizant asks. Let's understand about this game, then we will solve some question. Okay. So in this kind of game, what kind of questions we get? Let's discuss about it. Okay. So first of all, this is a Sudoku game. Now in Sudoku game, what is the rules? Let's discuss about the rules. There will be suppose total 5 symbols. Okay. So suppose one symbol is circle, then triangle, then suppose there is star, then plus. Okay. So these are the 4 symbols. Okay. And there is a square. Okay. So these will be the 5 symbols. Okay. In Sudoku game, suppose there is 5 cross 5 grid. 5 cross 5 means there will be total 5 rows, okay, and there will be total 5 columns. So if you guys can see here, these are the 5 rows, and then there will be 5 columns, okay. So in each cell, in each cell, okay, so in each cell, actually we need to put only one unique value, only one unique value. So we can fill the cell by using circle, triangle, star, plus or square. But the rule is, suppose I am filling here a circle, okay, then the whole row I cannot fill circle anywhere. Also in the whole column I cannot fill the circle anywhere. This is the rule. We need to find the missing symbol. The rule is in the whole row we can use only one symbol at a time. Also in the whole column we can only use one symbol at a time. You cannot repeat the symbol. This is the rule of Sudoku. So this is the first type of game which we see in Cognizant. Let's solve the first question. So this is some previous year question. Okay. So if you guys can see here, this is the Sudoku chart. And here, if you can see here, this is the question mark which we need to fill. Okay. We need to find which symbol we can fill here. Okay. This is 4 cross 4 Sudoku. 4 cross 4 Sudoku. Let's fill it and find out what symbol we can fill. Okay. So 4 options are given here. One is square, one is plus, one is circle, and one is triangle. So first of all, let's start filling the role, the easiest one. So if we can see here, the easiest one is this cell. Okay, this cell. This cell we can fill here first, okay? Because this one will be easiest because already three, three cells are filled here in the whole column. So circle is there, square is there, and plus is there. What is left? What is left? Only the one option which we have,
to fill here, that is triangle. Okay, so here we will fill triangle. Okay, so in this we can fill triangle. Now we need to find out the value of question mark. Okay, so triangle is there. Okay, triangle is there, then square is there, then question mark is there, then there is circle. So we have triangle, then we will eliminate the triangle option. We have square, we will eliminate the square option. We have circle, we will eliminate the circle option. Now we have left with plus. So in the question mark, we will fill plus, and this will be our answer. So this one was easy. So this kind of question you will be getting in Sudoku. Then let's solve the big one, 5 cross 5, in which also we need to fill this question mark. Okay. So first we will try to fill the easy one. So we have a star, we have a square, we have triangle, we have circle. So we have a star, we have a square, we have triangle, we have circle. Then what option is left to fill this one? Only plus we can fill here. Okay, so plus we have filled. Okay. Now this is full. We already have plus. Okay. Now moving forward. Here, if you guys can see here, we have some two options. Okay. So let's fill it. So now let's fill this one. Okay, this one. I think this one would be fine because already three are filled. Like we have triangle, we have plus, we have circle. We can choose any two options here. Okay, any two options here. Okay, so let's talk about it. So let's talk about this cell first. Okay, this cell, this cell. Let's fill this cell. Can we fill here a square? A square we cannot fill because if you can see here, a square is here in the row. Okay, so if here is a square, we cannot fill a square here. So a square option is cancelled. Okay, can we fill here triangle? Triangle also we cannot fill because triangle is here. Okay, circle also we cannot here fill क्योंकि circle is there in the column. Plus we cannot fill. Okay, so we only have one option left. Okay, we only have one option left. Okay, so circle we cannot fill. Okay, plus we cannot fill. Okay, and triangle we cannot fill. So these three things we cannot fill. Okay, circle, plus, and triangle. So we only the option which we have is star. Okay, so here we can fill the star. Okay, because star we can fill here, it will satisfy the condition for the row, also for the column. Okay, now let's fill this one. Okay, now star we have, circle we have, plus we have, triangle we have. So this we need to fill. Okay, so what we can fill here, only one option is left, which is square. Okay, now this row is completed. Okay, this row is completed now. Okay, now let's complete this one. Okay, let's complete this one. So for let's fill this one cell. Okay, so in this star we cannot fill. Okay, star we cannot fill. Okay, also we cannot fill triangle. Okay, we cannot fill the uh, square as well. Okay, so we have two options. Either we can fill here, either we can fill here plus, or either we can fill here in 0 comma 0, either we can fill here plus or circle. Okay, so this for this one we can fill here. Okay, now suppose we fill here, let's take one leap of faith, if because if we can solve this row, then our whole question will be solved. Okay, only we need to like solve this row. If we will solve this row easily, we can fill this question mark as well. Okay, so this row is complicated, which we need to fill. Okay, so let's fill here plus. Okay, let's try our option with plus. So suppose if we will choose here plus. Okay, then if we will choose here plus, we need to fill the circle here. Okay, circle here. Okay, okay, so now here is plus and here is circle. Okay, now if we have circle here, in this option what we can fill? Okay, so this is currently full. Okay, so suppose now here is circle.
In this option, what we can fill, okay, which we need to identify. So we have square, we have triangle, we have circle. We have two options. Either we can fill star or either we can fill plus. Okay. So plus we will fill here. What is the reason to fill plus here? Because we have two empty cells, this one and this one. So plus we cannot fill here because here is already a plus in this row. We have plus. So we only have one option that we can fill star here. So let's fill star. And here, sorry, we have plus here, so we only have one option that we need to fill plus here, plus here, plus here, okay, and star here and plus here, okay. Now we got plus here, okay, so this one we got plus and this one we got star, okay. Now we got here plus and here got star, okay. Now we need to fill this question mark, okay. Now we can fill this question mark. So first of all, let's fill this row. In this row, we have circle, okay, we have circle, okay, we have square, we have triangle. So these three we can eliminate. So circle we don't need to fill in question mark, square we don't need to fill in question mark, and triangle also we don't need to fill in question mark. We have plus and star, okay, plus and star. Now in this question mark, if you can see here, we already have plus here, right? We already have plus here. So can we fill here plus? No, because we already have plus here. So we can fill here star. Okay. So let's try with star here. Okay. And this option we can say plus. Okay. Now to validate it, let's complete, because we got the answer. We can fill the star. Okay. But it is a possibility maybe we have filled something wrong. So for validating our answer, let's complete this. So if we can complete the whole stuff, then definitely our answer is correct. Okay. So we have filled here star and here we have filled plus. Okay. So here we have filled plus. We have so here we will fill star, because star we cannot fill here because we have here. So star plus, so here we will fill square. Okay. Now if we have a square here, now let's fill this one. We have a square, okay, we have star, we have plus. Can we fill here triangle? Can we fill here triangle? Yes, we can fill here triangle. And we can fill here circle. Okay, so here if we got circle, we can fill here triangle. And if here is triangle, then we can fill here, so star, triangle, circle. Now if you can see here, the whole Sudoku is completed and no property is contradicting. That's why our star answer is right. Now you can see the difficulty. It is a little bit difficult, okay. So this kind of question you will get in high level. So this is the Sudoku challenge which we need to complete. I have explained you two questions. I hope you guys got it, like how we need to solve it, okay. We will be coming with more challenges. You can purchase the course, link will be in the description. In this course, you will be having the communication assessment, you will be having the mock test for aptitude, you will be having the technical assessment mock test, you will be having the actual previous year solutions and actual questions from this year also you have. So there are a lot of things. There are practice questions available, okay. So practice questions also are also included. So you can purchase the mock test link will be in the description. Thank you so much for watching. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट, साथ साथ में आपको एप्टीट्यूड असेसमेंट के 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टेक्निकल असेसमेंट के 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलने वाले हैं पीडीएफ में। साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के काफी सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो ये सभी का आप यूज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे चीजों को। मेक श्योर कि आप इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए अगर आप चाहो तो मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 गेम बेस्ड एप्टीट्यूड कॉग्निजेंट जेंसी का, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग चैलेंजेस के बारे में। एंड लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले इसको समझते हैं इसमें कैसे चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन आप देख सकते हो 6 मिनट्स की ड्यूरेशन है। विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, वेयर यू आर सपोर्ट टू फाइंड द पेयर ऑफ फिगर्स दैट फॉलोज द सेम रूल एज द गिवन बाय इन क्वेश्चन। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको कुछ फिगर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड उन फिगर्स को आपको बेसिकली एनालाइज करना है। अब एनालाइज करके आपको क्या पता लगाना है, आपको यहाँ पर ज्यादातर ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक फिगर दिया जाएगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी एक डायग्राम या एक फिगर की, और उस फिगर को देखकर आपको या तो पेयर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या फिर आपको उस क्वेश्चन को देखकर ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपको एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये है पिक द वन विच डिज नॉट फिट द ग्रुप। सो ये काइंड ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब इसमें इतने सारे फिगर्स दिए हैं, लाइक इसका आप नंबरिंग करोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम होगा नहीं, मुश्किल से 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का टाइम आप बोल सकते हो। तो आपको फटाफट से एनालाइज चीजें करनी है, कैसे करनी होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली इसमें लिखा है कि पिक द वन दैट डज नॉट फिट द ग्रुप, मतलब ये काफी सारे फिगर्स हैं, जो फिगर इस वाले ग्रुप में फिट नहीं होता है हमें उसको चूज करना है। तो अगर आप देखोगे इसमें तो मल्टीपल फिगर्स है, फटाफट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले फिगर्स में तो कोई भी यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें स्क्वायर दिया है और सर्कल दिया है, इसमें ट्राइंगल और सर्कल दिया है, इसमें ट्राइंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है, ये आप देख सकते हो। ये हमें एक डायग्राम दिया है। तो इस प्रकार के अलग अलग यहाँ पर डायग्राम्स हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से कोई डायग्राम रिलेटेड टू पैटर्न इसमें ऑब्जर्व नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज है कि इसमें जो दो फिगर्स दिए हैं उसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कलर्स दो हैं, ठीक है। कलर्स कलर्स दो हैं, ठीक है। कितने हैं? दो, अगर ये अपना ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप तो। एक है व्हाइट और एक है ब्लैक, ठीक है। ये मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। एक जो फिगर्स है उसमें एक कलर दिया है जो कि है व्हाइट, और दूसरा जो कलर है वो दिया है ब्लैक, ठीक है। एक चीज जो मैं और ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जितने भी व्हाइट कलर के डायग्राम्स हैं वो सारे फिगर्स में कहां पर हैं? सारे फिगर्स में बाहर, मतलब अलग अलग है। व्हाइट वाला डायग्राम अलग बनाया हुआ है और ब्लैक वाला डायग्राम अलग बनाया हुआ है। सारे फिगर्स में व्हाइट वाला जो डायग्राम है वो छोटा है और अलग है। ब्लैक वाला जो डायग्राम है वो यहाँ पर बड़ा है, और यहाँ पर ये भी दोनों आपस में सेपरेट है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे तो केवल एकमात्र ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहां पर जो ब्लैक वाला डायग्राम है ऐसा ट्राइंगल करके कुछ बना है, और उस डायग्राम के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर हमें एक स्क्वायर ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम है, इस वाले फिगर में एक डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम। तो बाकी के ग्रुप में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, बाकी के ग्रुप में दोनों डायग्राम्स सेपरेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हो और ऑब्जर्व करके आप कोशिश कर रहे हो पता लगाने का कि यहाँ पर क्या चीजें तो अलग से दिख रही है। बाकी अगर आप कॉग्निजेंट के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेक्निकल असेसमेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। उसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका है, जैसे कॉग्निजेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो उसका असेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, टेक्निकल असेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टेक्निकल असेसमेंट के पीडीएफ में विथ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिस टेस्ट आपको मल्टीपल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हर टेस्ट में 10 से 20 क्वेश्चंस हैं, और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। डीआई का अलग से मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ये आप सब यूज कर पाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, प्राइस बहुत कम है, तो ये आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि सपोज आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक देख सकते हो आप काफी सारे डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप वहीं पे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में होता क्या है, काफी सारे डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। काफी टाइम में इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो डॉट्स हैं वन बाय वन, ये जो डॉट्स हैं ये लाइट करेंगे। जैसे सबसे पहले मान लिया कि ये वाला जो डॉट है ये रेड हो गया, तो ये डॉट सबसे पहले रेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो लाइट चली जाएगी। तो जैसे ये रेड हो जाएगा तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना, आपको याद रखना कि ये वाला डॉट यहाँ पर रेड हुआ था, ठीक है। फिर सपोज ये वाला डॉट रेड हो गया और फिर लाइट चली जाएगी और फिर से ये जो है वो ग्रे हो जाएंगे। तो अब आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये वाला डॉट यहाँ पर
रेड हुआ था, फिर सेकंड नंबर पे ये वाला डॉट रेड हुआ है, तो आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, फिर इस पे करना है। फिर सपोज ये वाला डॉट रेड हो जाता है और फिर से ये ग्रे हो जाएंगे सारे के सारे, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये फर्स्ट पे रेड हुआ था, ये सेकंड पे रेड हुआ है और ये थर्ड पे रेड हुआ है। तो आप पहले इसको क्लिक करोगे, फिर इसको, फिर इसको। अब सपोज ये वाला डॉट रेड हो जाता है, ठीक है, ये वाला डॉट सपोज रेड हो गया। अब आप याद रखोगे सबसे पहले ये वाला डॉट रेड हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब ये हुआ है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे डॉट्स यहाँ पर रेड होते चले जाएंगे और आपको नंबरिंग याद करनी पड़ेगी, सबसे पहले कौन सा डॉट रेड हो रहा है, फिर कौन सा रेड हो रहा है, ठीक है। और ये जो नंबरिंग आप जितनी लंबी याद रख पाओगे उतना आपका स्कोर इसमें बढ़ता जाएगा, फिर आपके दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर याद रख सको पैटर्न, जो भी पैटर्न में डिस्प्ले हो रहे हैं डॉट्स रेड रेड होके, सबसे पहले ये रेड हुआ, फिर ये रेड हुआ, तो उसको आपको रिमेंबर करके उसी को क्लिक करना है। तो ये वाले भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक और टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रिड, और ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है, ठीक है, काफी ज्यादा कॉमन है। और मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, जिसमें क्या होता है, आपको इधर एक पैटर्न दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और बताओ कि ये जो चार ऑप्शंस दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये जो पैटर्न दिया है इसको ऑब्जर्व करके ये बताना होता है कि इस साइड के जो ऑप्शन है उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब अगर आप इसमें देखो तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें बस एक जो कॉमन चीज हमें दिख रही है कि ऊपर की रो पूरी प्लस है, नीचे की रो पूरी प्लस है। इसमें भी ऊपर की रो पूरी प्लस है और नीचे की रो भी पूरी प्लस है। तो ये हमें कॉमन चीज देखने को मिल रही है इन दोनों ही पैटर्न्स में। बाकी एक चीज और हमें देखने को मिल रही है, जो बीच की रो है उसमें तीनों अलग अलग डायग्राम्स है, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर की रो पूरी प्लस है, नीचे की रो पूरी प्लस है और बीच की रो में अलग अलग डायग्राम्स है। तो यही तो हमें देखने को मिल रहा है इस वाले पैटर्न में, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, क्या इसमें ऊपर की रो प्लस है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसमें ऊपर की रो प्लस है, हाँ है। क्या इसमें नीचे की रो प्लस है, हाँ है। क्या बीच के तीनों डायग्राम अलग अलग हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो 3 सही हो गया, ठीक है। क्या इसमें ऊपर की रो प्लस है, हाँ है। क्या इसमें नीचे की रो प्लस है, हाँ है। क्या इसके तीनों डायग्राम्स अलग अलग हैं, हाँ है। तो क्या ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 भी सही हो गया। क्या इसमें ऊपर की रो प्लस है, हाँ है। क्या नीचे की रो प्लस है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और एक और जैसे ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप यहाँ पर कॉग्निजेंट के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉग्निजेंट के मॉक टेस्ट के, कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट जिसमें आप एनरोल कर पाओगे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं जरा। तो सबसे पहले दीज टू ग्रिड्स फॉलो अ रूल, तो सबसे पहले रूल अपन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या रूल फॉलो कर रहे हैं। तो जितना रूल मुझे समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहले तो ये दो कलर सेम है, ये दो कलर सेम है, ये तीन कलर सेम है जो डायगोनल पे हैं, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये दोनों कलर सेम है, ठीक है। अब ऑप्शन के बेसिस पर हमें आंसर देना है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें हमें कहीं भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है जिसमें ये जो साइड के दोनों कलर्स हैं ये सेम देखने को मिले, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये रूल तो नहीं है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा देखने को ही नहीं मिल रहा। दोनों कॉर्नर के अगर आप देखोगे तो कलर सेम है, क्या हमें दोनों कॉर्नर के किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, सही इस वाले में दिख रहे हैं, ठीक है। बट किसी और में क्या देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और जनरली इनमें दो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, 2 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। और तो एक ये वाला देखने को मिल रहा है और एक ये वाला देखने को मिल रहा है, तो ठीक है कि इसमें ये जो दो हैं ये दोनों सेम है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये अपन का एक हो सकता है। बाकी और देख लेते हैं इसमें क्या है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज और कॉमन है कि ये दोनों कलर सेम है, यही तो हमने कहा था। तो ऐसा भी किसी ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिल रहा कि ये दोनों कलर्स जो हैं अपन के वो सेम देखने को मिले, तो ये भी पैटर्न हमारा रूल में नहीं हो सकता। एक जो इसमें कॉमन चीज है वो ये है, जो हम डेफिनेटली इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या कि अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर ये जो डायगोनल है वो तीनों ट्राइंगल हैं और ये ऐसे डायगोनल में है, तीनों ट्राइंगल हैं और डायगोनल में है। तो ये एक रूल हमें देखने को मिल रहा है कि भैया तीनों ट्राइंगल हैं और डायगोनल में है, तीनों ट्राइंगल हैं और डायगोनल में है। तो ये चीज हमें एक देखने को मिल रही है कि भैया तीनों ट्राइंगल में है और डायगोनल में है, तीनों ट्राइंगल में है।
और अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ऑप्शन और हमें देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि कॉर्नर के ये जो दो हैं कलर्स वो सेम है। मतलब यहां पर आप देखोगे सर्कल सर्कल, यहां पर प्लस प्लस, तो यहां पर भी प्लस प्लस है और सर्कल सर्कल है। अब कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, डायगोनल वाला पैटर्न या ये वाला? देखो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तो हमें नहीं पता कि वो लोग कौन सा रूल प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। देखो ऑप्शंस में अगर सपोज ऑप्शन में मैं बता रहा हूं, अगर सपोज ये अगर अपन इसका नंबरिंग करें, ये है ऑप्शन 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। सपोज ऑप्शन में 1 3 दिया हुआ है, ठीक है, और 1 और 2 नहीं दिया हुआ, तो आप 1 3 को चूज करना, 1 और 3 को। अगर 1 2 दिया हुआ है और 1 3 नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप इसको चूज करना, 1 2 को, 1 3 को चूज मत करना, डायगोनल वाले को, पैटर्न को, क्योंकि इसमें दो पैटर्न अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है और ऑप्शंस के ऊपर है कि ऑप्शंस में क्या दिया है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना। अदरवाइज मैं हमेशा उस चीज को प्रेफर करूंगा कि अगर कहीं पर भी एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो उस वाले पैटर्न को आप प्रेफर करो। एग्जैक्ट मैच मतलब जो इस पैटर्न में है, जो इस पैटर्न में है वही इस पैटर्न में है। तो अगर आप देखोगे तो डायगोनल ट्रायंगल है, डायगोनल ट्रायंगल है, डायगोनल ट्रायंगल है, डायगोनल ट्रायंगल, ये एग्जैक्ट मैच वाली चीज है। तो अगर एग्जैक्ट मैच चारों डायग्राम में एक सा हो रहा है, क्योंकि अगर आप 1 और 2 वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहां पर आप देखोगे ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, तो एग्जैक्ट मैच नहीं है इसमें। यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल, ये डायगोनल डायगोनल डायगोनल्स, ये सब ट्रायंगल्स है। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो हमेशा 1 3 वाला ऑप्शन चूज करना जो एग्जैक्ट मैच कर रहा हो, मतलब डायगोनल सेम है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं सेकंड पैटर्न में, विच इज इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग चैलेंज। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। On this website you have some challenges like this, and what we need to do in these kind of thing is, so basically this is the website, okay? So in this actually we need to remember the point, okay? We need to remember the point blinked, okay? So for an example, when you will when I will click on the games, okay, it will start with some games and I will just show you what actually we need to do, okay? So if you guys can see here, this point is blinked, right? So see my arrow please. So when I clicked here, let me show you again, okay? Just see, okay, just see. So see here, this one, okay? Okay, so I'll just show you. So if you can see here, so when the light blinked, it blinked in that point, okay? I just captured the screenshot. So this is the point where the light ignite, okay? So actually they will ignite this kind of light 2 to 3 times. So suppose this kind of chart is given, okay, and they are igniting the light. First for this point the light is ignited. Suppose next for this point the light is ignited. You actually need to remember for which point the lighting is ignited, okay? So you need to actually remember the sequence. So for an example, suppose they ignited the light for this point, then they ignited the light for this point, then suppose they ignited the line for this point, then they will ask that click the dots in the sequence. Then you will click first this point, okay, this will be 1 because first this is ignited, then second you will click on this point because this one is ignited, then third you will click on this point because this one is ignited. So this is basically a light challenge where some points will be ignited and you need to click on the specific points which are igniting, okay? So this kind of questions you may get, okay? There is a possibility that you may get, it is not guaranteed, but I am just explaining you. Suppose if you will get this kind of question in the game based aptitude, so make sure how you will attempt it, okay? I think this is clear, okay? So some lights will ignite and you need to remember the sequence and do it, okay? So this is the one. Now let's discuss about another. So in this kind of game based assessment questions, you will be getting some question like this. Also the website link I will be provided in the description, which you can use to play these games, okay? So if you guys can see here, rotated but identical. So these two figures are given only in 15 seconds. We need to identify if these figures are rotated and identical. So just see here, three borders are fully covered, one border is left with 1 point, okay? Check in this one, three borders are fully covered and one border is left with 1 point, okay? So this is identical and this is also covered. So yes, the answer is yes.
these both figures are identical. You actually need to find it if it is identical or not only in 15 seconds. Okay, so this is the one thing. Moving forward, this is kind of challenge in which we need to identify the pattern. So in this kind of game, we will get some question in which we need to identify which option follows the correct pattern. So we need to see these figures, and based on these figures we need to identify if these figures also which options of these figures also follow the same pattern. Okay, so first one, if you will see here, so the whole three cells are with the same symbol. Okay, in this figure also whole three cells are with the same symbol. So we actually need to identify this kind of pattern where the whole three cells are with the same symbol. So see here in this option 4, we have whole three cells with the same symbol. Also in option 3, we have whole three cells with the same symbol. So these two will be our answer. So option number 3 and 4 is our answer. Also, let's discuss this. There are two grids follow a rule. So this is also given here. Which two of these grids follow the same rule? So if you can see here, so here also three cells follows the same symbol, three cells follow the same symbol. Here also three cells follows the same symbol, three cells follow the same symbol. So these two will be the answer, figure number 2 and figure number 4. Then this is a little bit typical, and when your level will increase, you will be getting some difficult questions. So in this actually, if you guys can see here, if observe these two figures. Okay, what things we can observe is, first see if there is any similarity between these two symbols. Okay, so I cannot see any similarity because everything is so different. One similarity which I can see is, if you guys can see here, okay, so one similarity I can see here. Okay, so what is the similarity? Just try to identify it. Okay, what kind of similarity you are like getting here? If you guys can identify, just tell me any kind of similarity if you can identify. No, so let me tell you. Okay, so basically here, if you guys can notice here, if you will notice the maximum number of a symbol, okay, it is 4. Okay, so there are total 4 number of symbol in same sequence, okay, with the same symbol, which is circle, which is the maximum. And also here we can notice in this figure, there is these, okay, 4 numbers. Okay, so a square is also in 4 number. This is the maximum number which pattern I can identify. Here, if you will notice, only in these two figures, we can see two figures with two figures with 4 numbers, like here plus with 4 number of plus. In this figure there are 4 number of triangles. Okay, otherwise I cannot see any similarity, because here if you guys will look, here you guys will look, there is no similarity, right? So this option I think we can try. So this could be our one answer. Otherwise, if you can look any other similarity, please let me know in the comment section. Okay, so this could be our answer. Okay, so this kind of questions also comes in grid challenge. So also I have posted like 3 to 4 videos. In this video also we have discussed also website link you will be getting, in which you can practice some questions. Okay, link will be in the description. Also I will be providing the mock test link which you can use for practice. Like there are a lot of mock tests available which you can use for your aptitude practice. Aptitude is very important, which you can use for practice. Thank you so much for watching. Level of questions also. Okay, another thing which I want to talk about is, you will be getting the link of the mock test in the description, in which we have mock test for aptitude, we have mock test for practice aptitude. So practice aptitude we have more than 10 mock test. You will be getting 200 plus questions on maths. Okay, so you guys already know one part is maths and second is gamified assessment. So for maths you will be getting 200 plus question. Also gamified assessment we have provided like 2 mock test, and also here you can get the third mock test. Okay, so some gamified question
questions will be there. And for technical assessment also we have two mock tests. Also previous year questions for technical assessment we have with solution. Okay, so make sure if you want a good preparation in very small time, because I already know you guys have very small time to prepare, you can purchase the mock test. Link will be in the description. So let's start with game-based aptitude question solution for Switch challenge. Also, one thing that I already uploaded many parts for game-based challenge. So if you have not watched, you can also watch them. Okay. So first, this is the most basic challenge, जिसके through we will understand the concept, okay, of switch challenge. So basically, in switch challenge, we need to do the numberings. We need to do the numberings. Okay. And when you will practice it, you can do this numbering in your brain. You do not need to write it, but in your brain you can do. Okay. So how we actually solve? I will just give you a proper idea, then I will tell you without numbering how we can do that. Okay. So first, if you can see here, we need to provide the numbers. So for this is the triangle. So for triangle, we can provide number 1. For circle, we can provide number 2. For square, we can provide number 3. And for plus, we will provide number 4. Now we have some output. Okay. So based on the output, we need to arrange them. So first we have circle. What is the number of circle? 2. So here our answer will be 2. Then we have plus. What is the number for plus? 4. Then answer will be 4. Then we have square. What is the number for square? 3. So answer will be 3. Then we have triangle. So what is the number for triangle? 1. So 2, 4, 3, 1. 2431. This is our answer. Okay. If you guys can see here, based on the rearrangement, we provided the answer. But we can also solve this by only seeing this. Then why we are doing the numbering? Because in high level of questions, you cannot solve the direct questions using by only seeing them. You need to provide the numbering. We will be talking about the high level questions. For them, actually the numbering is essential. So if this kind of basic challenge you are getting, you can directly solve the question. How? I will just tell you. So just see the output. Okay. And by the output, just start catching this through the options. So if you can see here, here is the circle, and you can see here, here is the circle at number 2. So you guys already know the first number will be number 2. Okay, in the answer. Then this cannot be the answer, this cannot be the answer, only this can be the answer. So you can directly tick that. Okay. So this is the way actually for the basic challenge. So this is the basic challenge. Only just see which number you are getting. So in the output you are getting circle here. Circle is number 2 from here. So you can see the option and directly take the answer. Okay. Also, this is the second basic challenge. I will be just solving that also. Then we will move forward with high level challenge. Okay. So again, let's solve this. So if you can see here, first we can see here, here is square, and square we can see here at number 3. So answer should be start with 3. So this option cannot be true. Then we can see here, here it is a plus, and plus here is at first number. So it should be 3 then 1. So this should be our answer. So 3, 1, 2, 4. This is our answer. So this is the basic challenge. Okay. Now let's do it with some different challenge. Okay. So again, see here, here is plus. Okay. Plus is at number 2. Okay. Plus is at number 2. So first it should be 2, and here only we can see here 2. Okay, so 2, 4, 1, 3. But actually you need to tick mark this question only in 15 seconds. Okay, so the time will be very less. This is the main part. The time will be less. So in less time only you need to solve that. Okay, so answer will be 2, 4, 1, 3. Okay, I hope you guys got it. Also, if you want to prepare for aptitude maths and gamified assessment, technical assessment, everything with timer, so we have provided the mock test. The link will be in the description. You will be getting the timer also. There are multiple mock tests available. Link you can see in the description, and timers are provided with solution for each question. Okay, then let's start with the next question. So here, if you guys can see here, so here is plus. Okay, so plus on which number? 3. Okay, 3. Okay, so either it should be option this or this. Okay, then we have triangle. Triangle is on number 4. So 3, 4. So this should be our answer. Okay, so 3, 4, 2, 1. This will be our answer. Okay,
Then next challenge. So now this is the difficult challenge in which we need to do the numbering, otherwise you cannot solve the question. So here, if you guys can see here, there are total three iterations. Okay, three iteration. How we solve these question, I'll just tell you. So first do the numbering. So we have square, then we have plus, we have triangle, we have circle. Okay, just do the numbering. So for square it is number 1, for plus 2, for triangle 3, and for circle 4. Okay, so 1 2 3 4 we provided the numbering. Now they are saying 3 to 1 4. So now we need to arrange the symbols in the order of 3 to 1 4. So first they are saying 3 to 1 4. Okay, so first there will be 3, so there will be triangle, then 2, then plus, then 1, that would be square, and then 4, then it would be circle. So this kind of sequence we will be getting after performing this iteration. Then they are saying 2 1 3 4. Then again we need to rearrange that. Okay, so it is 1 2 3 4. Now we need to do 2 1 3 4. So first there will be 2, that means plus, then 1, that means triangle, then 3, which will be square, then 4 is circle. Okay, now there are total three options available. Okay, we need to get the output like this, and we need to tick mark the correct option. Okay, so triangle plus square circle. Okay, so now see here, triangle, let's give the numbering 1 2 3 4. Okay, so first we are getting triangle, triangle is at 2, so 2 would be there. Then we are getting plus, plus is on 1, so 1. Then this on 3, then 3, then circle is on 4, then 4. So 2 1 3 4. Let's take the correct answer, which is 2 1 3 4. So this would be our answer. Now you guys can see here there are multiple iterations. Okay, so this is the difficult level. So I hope you guys got it, because I very easily I explained you like how you can solve this. So that's how you will solve the difficult level of switch challenge. So let's solve this one also. So we have star, then triangle, then circle, and then plus. Okay, so they are saying 4 2 3 1. So first, so let's give the numbering 1 2 3 4. So 4, so we will place plus here, then 2, then we will place triangle here, then 3 we will place circle here. Okay, then 1 we will place star here. Okay, so this will be our sequence. Okay, now we need to choose the correct answer for the sequence plus, triangle, star, and circle. So plus is on number 1, so we will use number 1 here only. Then triangle is on number 2, so we will choose number 2 only. Star is on number 4, so it will be on 4. And this is on number 3, then 3. So 1 2 4 3, this will be our right answer. 1 2 4 3, this will be our right answer. So if you guys watch this video, I hope switch challenge you got. You will solve easily the switch challenge questions. Okay, and if you want practice, then mock test link will be here. Okay, so aptitude questions, multiple aptitude questions of maths are available here, which you can use. Thank you so much for watching.